welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Alia Bhatt to have an all-girls baby shower hosted by Neetu Kapoor and Soni Razdan. Arjun Kapoor shares unseen pictures from his recent trip to Paris with his girlfriend Malaika Arora. Parul Sharma chats with Mona Singh. आलिया भट्ट के लिए नीतू कपूर और सोनी राजदान क्या स्पेशल प्लानिंग कर रही हैं? इस मंथ के एंड में होगा टू बी मॉम आलिया भट्ट का बेबी शावर. रणबीर कपूर आलिया भट्ट अपने फैंस को दे सकते हैं एक खास सरप्राइज. क्या नीतू कपूर और सोनी राजदान मॉम टू बी आलिया भट्ट के लिए होस्ट करने वाली हैं ऑल गर्ल्स बेबी शावर? सून टू बी दादी और नानी ने बनाया है आलिया भट्ट के बेबी शावर के लिए एक स्पेशल प्लान. आलिया भट्ट ने जब से अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर की है, तब से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बेबी के अराइवल को लेकर सभी सुपर एक्साइटेड हैं. और अब तो सून टू बी मॉमी आलिया भट्ट अपनी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में है. ऐसे में रणबीर कपूर आलिया भट्ट की फैमिली, खास तौर पर सून टू बी दादी नानी जोड़ी ऑफ नीतू कपूर एंड सोनी राजदान की खुशी वाकई देखने लायक है, जो रिपोर्टेडली आलिया भट्ट के लिए ऑल गर्ल्स बेबी शावर होस्ट करने की प्लानिंग कर रही हैं. आलिया भट्ट का ये स्पेशल बेबी शावर एक स्टार स्टडेड अफेयर होने वाला है, जिसमें शाहीन भट्ट, करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, आकांक्षा रंजन, अनुष्का रंजन, नव्या नंदा, श्वेता बच्चन और आलिया भट्ट की पूरी गर्ल गैंग यानी कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स सभी का इस फंक्शन में आना कंफर्म माना जा रहा है. According to reports, Alia Bhatt is going to have a baby shower at the end of the month in Bandra. ऐसे में अब सभी को मॉमी टू बी आलिया भट्ट के स्पेशल बेबी शावर का इंतजार रहेगा. लेकिन फिलहाल तो पेरेंट्स टू बी रणबीर कपूर आलिया भट्ट अपनी रीसेंट रिलीज ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट लीड रोल्स में हैं और अपने फैंस से मिले खूब सारे प्यार के बाद अब रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट आर प्लानिंग टू डू मोर फिल्म्स टुगेदर इन द फ्यूचर. एक रिपोर्ट की माने तो द डुओ इज कीन टू डू अ रोमांटिक कॉमेडी मूवी टुगेदर. अ सोर्स quoted, both Ranbir and Alia were waiting for Brahmastra's release before deciding to work in a film again. The success of Brahmastra is making them explore more options together. They wish to do a romantic comedy together. In future, if any offer comes to them, they will consider if it is good. ऐसे में रणबीर कपूर आलिया भट्ट के फैंस के लिए ये वाकई में एक बड़ी खबर है, जो ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर आलिया भट्ट की ऑन स्क्रीन पेयरिंग से मेस्मराइज हैं. As written. मलाइका अरोरा की ओवरसाइज्ड शर्ट पर नेटिजन्स ने किया रिएक्ट. नेटिजन्स को लगा मलाइका अरोरा ने अर्जुन कपूर की शर्ट की है कैरी. अर्जुन कपूर ने अपने रीसेंट पेरिस ट्रिप से शेयर की मलाइका अरोरा की एक अनसीन पिक्चर. फैशनिस्टा मलाइका अरोरा अक्सर अपने स्टाइल को लेकर छाई रहती हैं. अपने बोल्ड एंड ग्लैमरस अंदाज के लिए मलाइका अरोरा को अप्रिसिएशंस भी मिलती हैं. रिसेंटली गॉर्जियस मलाइका अरोरा को एक बार फिर उनके बेस्ट अवतार में किया गया बांद्रा में स्पॉट. आप भी देख सकते हैं व्हाइट सिल्क ओवरसाइज्ड शर्ट में मलाइका अरोरा का ये सेक्सी लुक. अपने इस लुक को मलाइका अरोरा ने ब्लैक बूट्स के साथ कंप्लीट किया. वैसे मलाइका अरोरा इज अ ह्यूज फैन ऑफ ओवरसाइज्ड शर्ट्स एंड इस तरह के आउटफिट्स को वो अक्सर शॉर्ट्स के साथ टीम अप करती हैं या फिर शी एक्सेसराइजेस देम विद अ ब्रॉड बेल्ट. लेकिन लगता है नेटिजन्स को मलाइका अरोरा का ये ओवरसाइज्ड शर्ट स्टाइल कुछ खास पसंद नहीं आया और इसलिए एज एक्सपेक्टेड नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, आस्किंग इफ शी हैड फॉरगॉटन टू वेयर द बॉटम्स.
Others asked if the shirt belonged to Arjun Kapoor. हालांकि मलाइका अरोरा को उनकी ड्रेसिंग को लेकर किए गए ये कमेंट्स बहुत हैरान भी करते हैं। मलाइका अरोरा का मानना है कि अगर ऐसा ही कुछ स्टाइल हॉलीवुड में कैरी किया जाता है तो लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन जब बात बॉलीवुड स्टार्स की आती है तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स सामने आ जाते हैं। Well, इन सब के बावजूद Malaika Arora wears what she wants to wear without caring for what others might feel about it. और लाइफ में भी Malaika Arora का कुछ यही मंत्रा है। यही वजह है जो अर्जुन कपूर के साथ अपने रिलेशन को लेकर वो पूरी तरह से ओपन अप हो गई हैं। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर भी मलाइका अरोरा के लिए अपना प्यार शो करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। रिसेंटली अर्जुन कपूर ने मलाइका अरोरा के साथ अपनी रीसेंट पेरिस ट्रिप की कुछ थ्रोबैक पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की हैं। In the first photo, Arjun Kapoor can be seen in a black shirt teamed up with a beanie cap and a pair of blue sunglasses. Second photo में Malaika Arora makes a fashion statement in a striped grey pantsuit teamed up with a white bralette and the same set of sunglasses that Arjun Kapoor can be seen wearing in the first photo. In pictures के साथ he wrote in caption, "Who wore them better? Swipe right to know my answer. Hashtag throwback memories. Hashtag Paris." अर्जुन कपूर के इस पोस्ट पर उनकी लेडी लव मलाइका अरोरा ने भी रिएक्ट किया with Well, must say, सोशल मीडिया पीडीए के साथ साथ अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा सभी को मेजर कपल गोल्स भी दे रहे हैं। Hello and welcome. I'm Parul Sharma and you're watching Zoom TV. Today's guest is the talented Mona Singh. Hi Mona, welcome to the show. Thank you. Okay, so let's talk about your short film that is your latest project. It's called Ek Chup. And of course, it's around domestic violence, especially during the lockdown and during COVID. Tell me, why was it so important for you to kind of pick this subject? What was so special about this subject? And personally, why does Mona Singh sort of relate to this and why did she want to do this? See, it's not about relating, but I think as an actor, it is our responsibility to talk about such issues, you know, because normally people don't talk about it. It's a taboo in our society. And especially during lockdown, all of us got to hear about so many cases about domestic abuse, domestic violence. There were so many cases coming out in the papers. Yeah. So those were very bad times, you know. And Sonia had approached me with the script. Sonia, the director. Sonia, our director, she had approached me with the script. Yeah. I read it, and just within a day, I was so interested in doing it and being a part of it, because you know, we are in this field where we can only talk about these subjects and show what is happening around us. Then rest, it is up to the people how they take it and how they, you know, change their life after it. But I quite like the subject, and which is why I jumped at it to do it. Tell me, your character says this very hard-hitting line, which is Ek Chup Sau Sukh, which is something that I think we've all kind of heard in general a lot of times, and especially as women also in our society. As Mona, have you ever personally exercised that in your life? Like, have you ever Sometimes I have gone with that? Do you relate Sometimes to I it? have. You know, when you know that you're arguing with a stupid person, it's better to just keep quiet. Fair enough. Yeah, so I've used Ek Chup Sau Sukh in a very positive way. Right. But whereas the character, Dr. Radhika, is concerned, you know, that her silence was a weakness. Yeah. Which she uses it as her strength in the movie. But normally in the Indian society, you know, it's our mothers, it's our nannies who always tell us in a marriage कि चुप रहो, सुखी रहोगे, कुछ मत बोलो, सुखी रहोगे. But why? It's our life, you know. It's in our hands to change the way we want to. Yeah. So either you can choose to be sad all your life, or, you know, take a stand and change your life. So personally, in your personal life, you wouldn't kind of relate to this in the negative connotation that it does have in the movie, right? No, not at all. Like in your interpersonal I would relationships. definitely not be chup. बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे हम यहाँ पे. नहीं, हम बोलेंगे. You know, you recently had a very, very big release, Lal Singh Chadda. Congratulations. Thank you. I will just tell you that unanimously, everybody I have spoken to said you were the star of that show, and they loved your character and Thank your you. portrayal, right? Thank you. Having said that, it didn't perform so well at the box office.
As an actor, how do you reconcile these two things? Like when you are loved and getting so much appreciation for something, but the movie or the project in itself is not working, are you able to reconcile that? Is it anything that's in your head that does it stay there with you? You know, as an actor, what really matters to me is the kind of appreciation I got. That's a validation that every actor needs, and I got just that after the movie. Everybody from the industry, everybody who's not from the industry, messaged me, reached out to me, and that just meant a lot to me. I think I'm very satisfied with my performance. What was like the nicest message that you got for your performance? The best compliment I was getting was, you know, on screen, no mother has been shown this strong. Yeah. Normally, mothers are the ones who are always worrying, crying. Ek Chupping, या फिर प्रार्थना कर रही है मंदिर में कि मेरा बेटा कब आएगा and all of that. But this was just not that, you know. It was a very, very strong mother, very courageous, brave mother who's willing to go any extent for her son. And I don't think anybody has done that on the big screen. In a while. Yeah, it's been a while. Yeah, it's been I think Mother India was last. In both Ek Chup and Lal Singh Chadda, you worked with very talented young child actors. Yes. Tell me, how is that for you as an actor? Is it challenging? Is it easy? You know, kids always tend to surprise all of us because they are so raw, they are so, you know, unique in their own way. They ask certain questions which you don't even think of. Chahat was exactly like that. Yeah. I met her for reading and I was asking Sonia, I was like, she's so quiet. What is going to happen? She's not talking. Are we going to bond? She's like, Mona, don't worry at all. I've had my session of readings with her. And Sonia really spent good amount of time with Chahat. And when we were on shoot, she was just bang on. Yeah. In fact, you know, child actors are the ones who make you, you know, think on toes. You know, you are like so taken aback with them, with their performance because they're so raw and innocent. So you have to match up. So, same thing happened in Lal Singh Chadda with the little kid. He's so innocent and beautiful. Yeah. So yeah, you got to work a little harder when you're working with kids. What is it that you've learned from working with these child actors? They don't have any preconceived notions, you know. Right. They are always willing to listen to the directors. They don't come up with their ideas that I'll do the scene like this. Yeah. But you know, being in the industry for so many years, when you read a scene, you imagine the scene in a certain way. You're a little jaded. Yeah, and kids don't do that. They're so fresh and quick and fast. So that's what you got to learn from them, yeah. Absolutely. You know, from being one of like the most loved and famous television actors, right, starting from Jassi Jaisi Koi Nahi to now being a part of big movies and, you know, having big banner releases. Tell me, what has firstly the journey been for you as coming from television to movies, and also do you as an artist and an actor differentiate at all between the two mediums? Like, do you think there's any difference or is it all the same to you? See, it's definitely not all the same, you know. Acting keeps changing according to the medium. When you're on stage, you got to be a little louder, you got to project a little louder, your body language changes. So I'm so glad that I've done stage too, I've done theatre too. Whereas TV is concerned, you know, it's only the initial 4 or 5 episodes where people concentrate on quality. Right. Because it's the launch of the show. But later it just gets into the same rigmarole of, you know, quantity shooting. Sure. Because there's a telecast going on and everything happens in a rush. There's no planning. We don't get scripts beforehand. And this whole shift that I have made from TV to OTT and now to films has been so gradual and beautiful for me. I'm loving this whole phase of OTT, short films, movies. You get a bound script, you get time to spend on the script, you know, you have your workshops. Directors like Sonia and many other directors spend time with the actors, which is so important. It's like when you go on set, you're ready, you know what the character is. Exactly. But whereas when it comes to TV, you know, we are not prepared at all. So whatever we have to do is like on our own. Sure. I'm sure things will change when it comes to TV. I'm sure TV will also come around because it wasn't like this earlier. So OTT and movies are sort of the same medium for you as personally, and then TV is sort of very OTT, people are shooting it like films. Yeah. Exactly. That's what I mean. Most of the actors I've been speaking to these days are like, OTT and movies में मेरे को कोई difference नहीं लगता because उसमें नहीं लगता. But TV, OTT and films में difference है. It's a different ball game. Okay, and lastly, Mona, when, where, how are we seeing you next? Give us all the juicy updates of Mona Singh and her life on screen. You'll see me soon in Ek Chup. And I'm also currently shooting with Applause, so that should be out next year. I've just finished shooting for a series with Netflix, with Amazon, so everything will be out next year. But this year, this Ek Chup is going to come out soon. So lots of Mona coming to our screens very soon. Thank you so much for joining me, and good luck for everything ahead. Thank you so much. Coming up on the show,
Veteran actor Anupam Kher and Anil Kapoor were spotted outside late filmmaker Yash Chopra's house. कपूर साहब कहाँ खड़े हैं हम बताओ? यश जी के घर के सामने। यश जी के घर के सामने मैं स्ट्राइकिंग एक्टर था, तो पहला घर जहाँ मैं आया था तो मैं यहाँ आया था। तो मेरा पहला घर था, मैं यहाँ आया था। तो आज हम यहाँ से घूम रहे थे, मैं और कपूर साहब, तो लगा यश जी के मत्था टेक लें। यश चोपड़ा के घर के बाहर पहुंचे अनिल कपूर और अनुपम खेर। अनिल कपूर और अनुपम खेर को याद आए उनके स्ट्रगलिंग डेज। यश चोपड़ा के घर के बाहर के वीडियो को सोशल मीडिया पर किया जा रहा है प्रेस। अनिल कपूर और अनुपम खेर बॉलीवुड के कामयाब सेलेब्स में से एक हैं और रियल लाइफ में भी अनिल कपूर और अनुपम खेर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसे में साथ में मॉर्निंग वॉक करते हुए अनिल कपूर और अनुपम खेर जा पहुंचे लेट डायरेक्टर यश चोपड़ा के घर के बाहर, जहां उन्होंने न ही सिर्फ यश चोपड़ा की फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन को याद किया, बल्कि अपने स्ट्रगलिंग डेज में यश चोपड़ा की गई हेल्प को याद किया। मैं स्ट्राइकिंग एक्टर था, तो पहला घर जहाँ मैं आया था तो मैं यहाँ आया था। तो मेरा पहला घर था, मैं यहाँ आया था। बहुत स्ट्रगल किया ना। अरे वाह, मेरी तो विजय से शुरुआत थी और मेरा प्ले देखने आए थे। अच्छा, और प्ले देख के बोले बैनर तक कि तेरा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आज हम यहाँ से घूम रहे थे, मैं और कपूर साहब, तो लगा यश जी के मत्था टेक लें। थैंक यू वेरी मच यश जी फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ। Thank you, remember you today. वैसे आपको बता दें कि आज यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी के 33 इयर्स पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अनुपम खेर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, यश जी के घर के सामने सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हुए अनिल कपूर और मैं यश चोपड़ा जी के घर के सामने रुके और पुरानी यादें ताज़ा की और आशीर्वाद भी लिया। मेरी खासकर जिंदगी में यश जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू सर जी, आपके प्यार और आपके साथ बीते हुए लम्हों के लिए। इंसिडेंटली टुडे इज ऑल्सो #33 years of चांदनी। आपको बता दें कि 33 इयर्स पहले रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म चांदनी अनिल कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन अनिल कपूर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था, जिसका रिग्रेट उन्हें आज भी है। Anil Kapoor wrote on social media, 33 years of Chandni, a film which Yash ji offered me, but I regret not doing it. Shri ji, Rishi ji, Vinod ji and Yash ji, we all miss y'all so much. अनिल कपूर और अनुपम खेर के इस जेस्चर को नेटिजन्स सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं। कपूर साहब कहाँ खड़े हैं हम बताओ? यश जी के घर के सामने। यश जी के घर के सामने जब हम स्ट्रगलिंग एक्टर था, तो पहला घर जहाँ मैं आया था तो मैं यहाँ आया था। तो मेरा पहला घर था, मैं यहाँ आया था। बहुत स्ट्रगल किया ना। अरे वाह, मेरी तो विजय से शुरुआत थी और मेरा प्ले देखने आए थे। अच्छा, और प्ले देख के बोले बैनर तक कि तेरा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो आज हम यहाँ से घूम रहे थे, मैं और कपूर साहब, तो लगा यश जी के मत्था टेक लें। Thank you very much Yash ji for all your contribution in our life. Thank you, remember you today. Yeah.